हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में ब्लॉक 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करने वाली हूँ। आई होप आपने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मेरी वीडियो है उसे देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 की वीडियोज़ का, सो दैट आप इजीली उन वीडियोस को गो थ्रू कर लो और कल आराम से पेपर में लिख पाओ। सो लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट यूनिट इज यूनिट 13, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट से। So the first question is, why is Indian economy regarded as underdeveloped economy? State its basic characteristics. Next question is, in order to ensure balanced economic development and that the business is run on sound lines, the role of the government has assumed four dimensions. State these roles and discuss the implications of each. Next question is, distinguish between import substitution and export promotion. Next, financial savings and physical savings. And the last, economic growth and economic development. Guys, unit 13, 14 is least important from this block. Prepare well for block unit 15, 16 and 17. ये तीनों chapters बहुत important है. 13, 14 इतना important नहीं है. So time की shortage है तो आप skip कर सकते हो 13 and 14th chapter. So अब next chapter पर चलते हैं, that is unit 14, economic planning. So the first question is, discuss the long-term goals as adopted for economic planning in India. Is it correct to presume that of late plans have virtually abandoned the long-term goals of reduction in poverty, economic inequality and unemployment? Next question is, distinguish between collective planning and indicative planning. Unit 15, economic policies. This is important chapter. So let's discuss its questions. First is, what is economic policy? What are its different forms? ये आपका 20 marks का question आता है. So prepare well for this. Next question is, distinguish between new industrial policy of 1991 and the old policy of 1956 and outline the grounds on which the new policy had been criticized. ज़रूरी नहीं है कि distinguish करने के लिए ही आए, आपको new industrial policy के features भी पूछ सकते हैं, old policy के features भी पूछ सकते हैं. So उनके बारे में पढ़ लेना, बाकी आप distinguish तो कर ही लोगे easily अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल मत छोड़ना, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज नेसेसरी? फिस्कल पॉलिसी भी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी आता है. ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फिस्कल पॉलिसी के बारे में अलग से पूछ सकते हैं 20 नंबर में, मॉनेटरी के बारे में अलग से पूछ सकते हैं 20 मार्क्स में, दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं. सो प्रिपेयर वेल फॉर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज. Next question is, explain various objectives of fiscal policy. Explain the highlights of fiscal policy announced by Government of India. Last question, explain the fiscal imbalance that developed in India during 1980s. State the current fiscal situation and discuss the measures to be adopted for restoring the fiscal balance. ये सारे questions guys 20-20 नंबर में आते हैं. 3 से 4 पेज तो एटलीस्ट लिखकर आना ही आना है. So now 16th unit, that is small scale industries. First question is, define small scale sector. Discuss the institutional framework that has been evolved for the promotion and growth of small scale sector in India. What are the major constraints that are still being faced by the small scale sector? Next question is, discuss the services provided by the following national level institutions for promotion and development of small scale industries in India. First, Small Industries Development Organization. Second, National Institute
of Small Industry Extension Training. And third, Small Industries Development Bank of India. This is important. SIDBI के बारे में बहुत बार पूछा जाता है. So prepare well for this. Last question is, discuss the ways and means to overcome constraints faced by small scale industries. Next, this is the last chapter of this block, economic reforms. So first question is, what do you mean by privatization? Why is it considered necessary today? Explain the possible areas of privatization and point out the problems associated with privatization in India. इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है. यू कैंट स्किप दिस चैप्टर एट ऑल. हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको. Next question is, why were economic reforms necessary and what reforms have been introduced? Make a critical assessment of the impact of economic reforms, keeping in view the long-term objectives of economic development. Third question is, explain the framework of Indian financial system. Discuss the trade policy reforms initiated by Government of India since 1991 to 1992. Last question is, what are the reformist measures introduced by RBI and central government to strengthen the Indian money markets? So that's all from my side. This is the second last block of MCO-04. लास्ट ब्लॉक की वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी. टिल देन प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस. जितने भी मैंने क्वेश्चंस अब तक बताए हैं वो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लो. आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर देन 80 मार्क्स in this particular subject. So prepare well and all the best, and do share this video to all your friends. Subscribe my channel. Thank you.